So, shall we start? Yes. Okay. So, yesterday I've shown you about the stack concept. Today we'll see about the queue, and then once we cover this stack and queue, we will do the lab also. So here in queue is also one linear data structure, and Yes. here the complexity is also in term of big O n, because you have to insert n number of elements, but it depends like what operation you are performing. For every operation, complexity will be different. Searching, it will be different. Adding an element, removing an element. I will going to share all those stuff with you. So Okay. here in this queue is one data structure. Here also we are going to save an element in the form of array, but the follow of that element, accessing the element is in the term of the queue, means we are using the queue concept to access the element. And queue are used in some of the real-time examples, like as I said, use CPU scheduling, disk scheduling, and when the data is transferred between the process, like as you know, like multiple process when they run on a system, they have to communicate with each other asynchronously. They have to communicate with each other. Asynchronously means it means they can communicate with each other anytime. And synchronous, Okay. if I say the term synchronous, in that means one is waiting for other to complete, and then they will start process. Okay. Yes. But here in asynchronous, all the process they are run independent to each other. They will communicate with each other, but there is like no lagging, means it's not like so here communication they are doing means transferring of the message, input output buffer pipeline are there between the process. And for example, the data written by one process will going to use by another process, that is called as a synchronous, means here synchronization is there. They are updating another process that they are writing the data so they can use it. Okay. So Okay. what are the operation that we do it in the stack? That is your NQ, DQ. NQ means adding an item to the queue, and you can see this term. If this queue is full, then it will give a overflow condition, and DQ is a term which remove an item from the queue. Okay. And in the same order means as we do the pop from the queue, from Yes. the stack. So DQ will going to remove the item. Now here there are two more pointer similarly like we are using in a stack, right? The Yes. like top pointer. Here we are using front and rear. Front end. Yes. Yes, rear is used to get the last item from the queue that is inserted, and front is used to point it out the element which will going to be removed. Okay, so front Okay. and rear both will increment as we add an element and remove an element. Now here you Okay. see So front will not increment. front will increment, right? As you remove this element, front will point to this, right? So Because if we remove that front one, then it will front one means this change. one. No, no. Okay. Got it. Yeah, if you remove this one, front will like it's normally we use a circular queue. So if you remove this first one, suppose pointer is in this representing Yes. the last element, and if it is removed, then the queue will going to point it out this as a front and rear both. Rear are Okay. going to take the record of which element are inserting. Okay. So तो it will पीक भी जो जो पीक फंक्शन है वो भी मैं कि फ्रंट वाला एलिमेंट ही हमको ला के देगा कि पीक से हम कोई भी एलिमेंट देख सकते हैं. peak se function like it will go in peak means traverse hota hai. So you can see any element. You can just traverse the Okay. list. It's not Okay. like representing only one element. It is used for traversing the whole list. And Okay. then rear में क्या होता है कि rear will going to be increment as you are adding an element. Adding. So right, so last तो rear क्या होता है कि last element को point करता है, जैसे कि एक Mm. insert just like a top pointer. It's representing the Yes. last element, right? So rear is also going to do Mm. the same.
but तो in मेरा term of क्वेश्चन ये था, अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो फ्रंट नहीं चेंज होगा, सिर्फ रियर चेंज होगा। अगर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं फिर चेंज होगा ना वो फ्रंट वाला। अगर क्यू में हम ऐड कर रहे हैं सिर्फ एलिमेंट, तो सिर्फ हम्म, रियर वाला चेंज होगा, फ्रंट वाला नहीं चेंज होगा। हाँ, फ्रंट वाला कब चेंज होगा, जब आप उसको डिलीट करोगे। रियर हम्म जैसा आप इंसर्ट करते जाओगे, रियर एक इंसर्ट हुआ, ठीक है, रियर इसको पॉइंट हो गया पुराने वाले को, फिर इंसर्ट हुआ, रियर पॉइंट पुराने वाले को पॉइंट हो गया, फिर रियर जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है उसको, सॉरी, लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट होता है उसको पॉइंट करता है। मतलब जैसे एक डाला, फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, तो लास्ट एलिमेंट को रियर पॉइंट करता है। बट फ्रंट किसको हम्म पॉइंट करता है, जैसे फ्रंट मान लो इसमें है, आपने इसको डिलीट किया तो फ्रंट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। मतलब ये एलिमेंट नाउ it's having a high priority to remove, right? So as you remove an element, the front will keep on incrementing this side, and rear will going to point it out the last element. Let me show you, if I have some image, I can show. ये जैसे देखो, right? Data's rear was pointing to this. As you are inserting the data, rear will going to point it out the last element that is you have inserted. ओके, ओके लाइक सपोज आपने डेटा को इंसर्ट किया 35, 15, 25, जो भाई इंडेक्स यहाँ से है ना, सो दिस इज द लास्ट एलिमेंट दैट रियर इज पॉइंटिंग। एज यू इंसर्ट द यस न्यू एलिमेंट, इट विल पॉइंट द न्यू वन। सो रियर इज विद रिस्पेक्ट टू इंसर्शन। फ्रंट में क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट था, आपने दो एलिमेंट को रिमूव किया, फ्रंट इसको पॉइंट किया, अब 30 को आप रिमूव करोगे तो फ्रंट 5 को पॉइंट करेगा। 5 को रूफ ठीक करेक्ट। है। अभी इसका भी एक एग्जांपल, एंड फ्रंट एंड रियर व्हेन इट इज इक्वल, when you have no element or when you have a single element, तो फ्रंट एंड रियर दोनों को पॉइंट करेगा। कि जैसे कोई सिंगल एलिमेंट है, then it is only the last element, right? And front will going to point out that because वो ही remove हो सकता है। So front and rear when it will be equal when you have only one element। अभी यहाँ पे देखो, 10, 15, 5, 20, 19, रियर इसको पॉइंट कर रहा है ये एड्रेस को। अब आप नया डेटा यस डालोगे, इस यहाँ पे आएगा, फिर नया डेटा इधर आएगा, लाइक आपने एक नया डेटा डाला तो ये इसको पॉइंट करने लगे। अब यस आपने फ्रंट को इंक्रीमेंट किया, तो फ्रंट ने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, अब फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, तो रियर भी इस साइड मूव हो गया, राइट? सो इट विल गोइंग टू मूव इंडेक्स, शिफ्ट इंडेक्स either to left and right based on the like an operation. So this is the um, queue operation, how it works. As you insert the element, rear will going to increment, क्योंकि आप इंसर्ट करोगे रियर राइट साइड मूव करेगा, और फ्रंट जो है that is also move to the right side but deleting an element, and it is inserting an element. ओके और nowadays we are using circular queue. Earlier days circular queue की requirement क्यों आई, क्योंकि suppose you know the concept of linked list, right? As I यस told you, linked list is divided into two parts. First is your data, and another one is your like an address, data and address. So the next part is having a null value. It means that it is not holding the address of any node. So it means what? That after this there is no node to process. But हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट आ गया, सो इसमें क्या होता है कि जो ये पॉइंटर है वो इट विल गोइंग टू पॉइंट आउट द फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे कोई नल का कंसेप्ट नहीं है, नल वैल्यू का कोई भी कंसेप्ट हटा दिया गया है सर्कुलर क्यू में। इट विल बी लुक लाइक दिस। You can see this 0, 1, 2, 3, 4. So 4 will pointing back to the 0. So it will keep on moving. Here there is no जो null भी है वो memory occupy करता है null. So
The researcher, they thought that if we remove the null and point it out the first element, then this loop, this circular queue will keep on going. There is no null, there is no space will be occupied by null. So circular queues Okay. का concept आया, जिसमें processing same है, front and rear, they are working in the same thing. Only the thing is that the last node which is having a null value, which is pointing, see, उसमें क्या होता है ना कि अभी जैसे ये है, ठीक है, अब आपने 4 को डिक्लेयर कर दिया, 4 में अगर इसके बाद अब कोई कोई अनदर इंडेक्स नहीं है, तो और आपके पास स्पेस नहीं है, तो एलिमेंट सेव ही नहीं हो पाए. सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि इट्स लाइक इट कैन सेव एन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट इफ इट इज सर्कुलर. इसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा. इट मीन दैट रियर विल बी गोइंग टू पॉइंट टू दिस नाउ, द लास्ट एलिमेंट. सपोज 1 2 है, इसके बाद मुझे 3 डालना है, यहाँ पे तो कोई स्पेस नहीं है, राइट, एंड फ्रंट इज पॉइंटिंग टू हियर. सो हाउ विल डू दैट? सो इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट जब आया, so in circular queue this will going to point back, means it will keep on working in a circular fashion. So after 2 the data will going to be saved here, 3 4 5, and similarly the rear pointer will be keep on updating. तो अगर आप यहाँ पे 3 4 5 insert करोगे तो rear will going to point it here, and front will also depends, like front is in which position which he had deleted the last element. So suppose front ने अगर ये element को delete किया तो यहाँ होगा, otherwise here. Do you understand what I said? Circular queue. Yes. See here. This is one more तो लेकिन example. इसको इंट्रोड्यूस तो किया कि सिंपल क्यू से, Sorry, Miss. कि सर्कुलर क्यू को इंट्रोड्यूस क्यों किया उन्होंने ऐसे? Yeah, that only I said. Like इसके बाद कोई space ही नहीं रहेगा. Suppose अगर आपने यहाँ पे starting के दो value missing है, and you have a data, and you wanted to insert a new data, but you don't have an index here, right? How you can Yes. insert the data? If it is, if this node is holding the pointer of this node, then immediately then whatever the new data will come, they can occupy the empty space. तो यहाँ पे कोई भी empty Okay. space बचेगा नहीं. So it will work in a Okay. circular fashion. But अगर linear fashion of, if you apply linear fashion, then in that case, even if you have a space, but you don't have index here, then you can't utilize this. So that's the reason that they have introduced the circular queue. So it can work in a circular fashion, and as the element is deleted, that space can be reutilized. So they are more memory efficient and more faster. Okay. Okay. So as you do NQ, NQ10, NQ15, 20, 25, 30 यहाँ पे कर लिया, जैसे कि 5, 10, 15, 20. If you do DQ, so DQ operation will going to remove to which the front pointer is pointing. Okay. First of all हम लोग क्या करते, जब हम coding करते, then at that time we initialize front and rear to -1, or as the element we add it, we increase the rear. So rear just like top pointer की तरह last element को point करेगा, and as we pop, suppose मैंने pop किया तो front मेरा increment हो जाएगा, फिर again I will call pop, then again front will going to increment, then I will check is there empty space are there. So एक function होता है is full, is null, that will going to check is this queue is empty or having an element. Based on that it will going to insert an element. Okay. So like this it works. So is full and is empty function, they just check it if queue is full or is it empty. And Okay. if you can see here in my code also, I'm checking while performing a pop operation, I'm checking here is if is empty, और ये एक function है यहाँ पे कॉल हो रहा है, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है. You can see it. Public boolean, मैंने boolean type पे डिफाइन किया है is empty if my size equal to 0. अगर मेरा size 0 है, then it mean that size in the sense the number of element. If the number of Yes. element in the queue is 0, I will going to return otherwise false. तो ये जहाँ पे भी मैं कॉल करूंगा इसको, सिमिलरली फुल के लिए भी एक फंक्शन है. So तो इसका साइज इंक्रीज करो. yeah, so here if I call this, they will going to check queue is full or empty, and based on that they can insert an element. जैसे rear को increment हो रहा है, then हम check करेंगे क्या rear capacity -1 है, मतलब जो rear है total capacity जितनी है उससे जस्ट लाइक इंडेक्स -1 करते हैं ना हम, जैसे
size minus 1 will be your last index. Okay. So in that way we work it. And as I said you yesterday also that I have explained you, same thing, we will going to use some data structure to save an element. So what we do, in the form of array, we save an element and we just check the size of that queue. So size minus 1 will be based on the indexing, it will be the last index. So in that way we work, that we will see तो it ये work. rear -1 क्यों लिया Okay. Because कोड में? because at that earlier stage there is no element. यस, तो मैं कि rear भी तो 0 ही होना चाहिए, front अगर 0 है तो. हाँ, तो टॉप पॉइंटर हम कैसे -1 लेते हैं? फ्रंट यू कांट टेक इट -1. हम लोग रियर को -1 इसलिए लेते हैं कि इसमें प्लस करते जाएंगे, बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ एलिमेंट है. सो इट मीन्स रियर इज इक्वल टू -1 टू जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट देयर इज नथिंग एलिमेंट इन प्रेजेंट. सो इफ यू ट्राई टू, वो किस लिए इवॉल्व हुआ था, ताकि हम लोग वो जो एक कंडीशन बैठती ना कि लाइक अगर कुछ भी नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में या आपके एरे में, और या नॉट एन एरे, इफ इन कलेक्शन और एनीवेयर, if you don't have a data and you try to pop the data, तो वो error message generate होना चाहिए कि that like the stack is empty and your underflow condition जो है उसको implement करने के लिए उन्होंने -1 को represent किया. तो -1 पे like when you do +1 it will become obviously 0. So empty से वो जा रहा है, but front में ऐसा नहीं होता. Front थोड़ी empty को point कर रहा है, right? Front is pointing to the first element where you insert an data. समझ रहे? लाइक सपोज ये क्यू है, फ्रंट आपके हमेशा -1 पे नहीं करेगा. अगर फ्रंट -1 में करेगा मतलब क्या होगा कि वो क्या, तुम्हारे पास कोई डेटा ही नहीं है डिलीट करने की. when you point the first element, this 35, front is equal to 0, or you can say front is equal to this element, it means that this is the element, now you can delete it and you can increment that. but जो रियर के केस में ऐसा नहीं होता. रियर मीन्स अगर -1 है मतलब you don't have any element, so to whom you will represent the last element. That's the reason we take it as a -1. As we increment, it will keep on increasing 0 1 2 3 4 5, but front will always point to the first element or like that, so that as you decrement it, it will keep on increasing. Okay. So there are in some book they said you should take front also -1 when you have nothing to delete it. So in different book you will get different concept. I will see if I find something resources, because in there are 2 or 3 books while preparing for the gate, and I have just gone through it. So I have seen that some people, they are taking front is equal to -1 also when you have not started deleting it, when you don't have anything to delete. मतलब अगर आपका queue पूरा empty है, in that case they will take front and rear as a -1. Okay. But some books they said like front can be taken as representing the first element when you have an element. तो वो भी कह सकते हो कि अगर मेरे क्यू में कुछ भी नहीं है तो मैं दोनों को -1 ले सकता हूँ. Just try to download one book, Shomson series. I think I have already told you, but वो books का वो है कि नहीं देखना पड़ेगा. या ये वाले book. Yes, A plus plus. I think it might be there in the Amazon, but it is like this one. ये data structure, only for the data structure. Okay. This is the best book. You can try it if you get it from somewhere. ये books है. Yeah. In Delhi, lot of like bookstores are there who sells old book. From there you can get this. Okay. This is the best book. If you read it, you will completely understand. Yeah, इस book में लिखा है. I think front and rear is -1 when you don't have any element. So
तो ये कोड में actually why I mentioned this front is equal to 0, because I was assuming that there is at least some element are there, and it will keep on increasing or incrementing as we move on. Okay, just 1 minute. Yes. So as you can see here, as I said you, that in a circular cube, you can't insert a new element unless it is an empty, and if the queue is full. अब कुछ सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे rear point हो रहा है, then rear in case of circular only we will going to point it here. अगर आपके पास empty space है, even in that case rear cannot be point to this in case of a linear queue. That's the reason we use circular queue, and this circular queue will be going to move and point it to here, and from here it can start element, and you only think that कि ये front भी ऐसे से remove करते जाएगा और rear भी फिर ऐसे से increment हो जाएगा, तो आपको कोई constant नहीं होगा, right? So because of that, this is the reason. But this reason they ask you in the interview. Placement में तो basically they ask you data structure and this normal understanding of various data structure and algorithm. However, when you get an experience, when you get experience of 1 or 2 years, then you will become a skill specific, like whether you are data scientist, cloud, or Java programmer, Python programmer. In that case, they will ask you about the coding perspective. They will not ask you from the internal depth perspective. So that's the differences while when you are work means uh, giving interview as a fresher or the experience. So that's the reason you just make your concept clear. This concept will be always helpful in the competitive exam as well as in the interview while selecting the question. Like in MCQ base, they will give you this question and you have to tell them like 4 options will be there. Like if it is a Yes. circular queue, your rear is pointing to suppose they index this. If you add a one more element, then what will be the index of the new element? So it will be they That will give you 0, option. 1. Correct. 0, 1, 2, 3. So as you know about this, so you are selecting the 0. But some of them they make mistake, and MCQ is the first stage of clearing the round. So preparing that way. And there are different kind of queues are there. Priority queue is also there. So in that priority queue, this is used in a CPU scheduling. Whichever priority queue means each element in the queue has assigned a priority. Okay, priority means कि सपोज एक नंबर है, जैसे मैं 1 to 10 दे दे रहा हूँ. 1 मतलब मेरा हाई प्रायोरिटी है कि इसको पहले एग्जीक्यूट करना है, तो क्या कहते हैं कि दे आर जस्ट मैनेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्यू. सपोज एक क्यू है, इसमें प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 ऐसा सब प्रोसेस. सो प्रायोरिटी क्यू दे असाइन सम प्रायोरिटी वैल्यू, ओके, इंटीजर वैल्यू होती है लाइक 0 to 10, sorry 1 to 10. There are two architectures based are there. Earlier days architecture was considering one. Okay. So earlier days architecture, what they are doing, they are considering minimum value as a high priority. जैसे अगर मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 1 बोलने से क्या कि फर्स्ट ये आना चाहिए. ऐसा earlier days
जो आर्किटेक्चर था हमारे सिस्टम का वो ये फॉलो करता था, बट अभी उल्टा हो गया है। Nowadays what they वही do, हाईएस्ट नंबर। हाँ, highest number represent so what actually जो इन्वेंटर या कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजीज अपडेट हो रही है, दे मेन एम इज टू remove the like a complexity. So जो Java maybe earlier days it was very complex when was introduced, but they keep on updating it so that they can reduce complexity. They introduce collection framework, lambda expression. They introduce a फॉर लूप। मैंने बताया था कि दो टाइप के फॉर लूप होते हैं, राइट? एक तो नॉर्मल इंटीजर आई आई लेस देन कंडीशन आई प्लस प्लस, और एक हमने देखा था कलेक्शन में आई इज इक्वल टू आई कोलोन हैज नेक्स्ट इटरेशन नेक्स्ट, इफ यू रिमेंबर दैट, you remember that आई it was the syntax like this: for I is to temporary variable, and I said you that suppose, इटरेटर वन यू आर yeah, सेइंग इटरेटर। like this I was using, right? Means I will be going to assign with this iterator has next function. जैसे iterate करेगा I की value assign होगी, तो here you don't means एक complexity reduce होगा कि initialize करना, condition डालना। Similarly collection में मैंने बताया था, if you want to remove an element from the mid of an array, array में कैसा होता था कि in order to remove an element you have to first delete it, then you have to skip those array, means you have to move the array one index before or after, like, but collection may we have seen that you just take the name of a collection and just you type it remove, and it will going to remove it, and then if you print it then it will not show you on the screen, right? So they're reducing the complexity. So इसी complexity reducing को focus करते हुए they decided whichever the number are highest, that will be high priority, so that people they won't be confused. So they are taking this, so like this priority queue, तो वो क्या करते थे कि suppose in this queue, in that queue they will going to insert a process p1 p2 p3 p5 like that, and they will assign the highest number having high priority, means वो सबसे पहले execute हो. So normally whenever we run the system, हाई प्रायोरिटी किसकी होती है? अगर हम जिस सिस्टम में रन करते हैं, हाउ वी डिसाइड दैट हाई प्रायोरिटी? हाई प्रायोरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस दैट आर एट सिस्टम लेवल दे आर वर्क, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, दे आर हैविंग हाई प्रायोरिटी, एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज योर एप्लीकेशन दैट यू वांटेड टू रन। लाइनेक्स में क्या होता है कि सपोज विंडो है, in window if your system hang you have to either shut down or you have to do control alt delete, but in window you can just write down the kill function, and process id if you type it you can close that process. So a kill function hota hai through which you can delete the, means you can kill that process only with the help of this process id. तो उसको हमें ऐसा कुछ ओके लिखना पड़ता है, इसको आपको ch mode परमिशन चाहिए, ch mode प्लस एक्स और सी एच मोड प्लस 777, तो ये एक सिस्टम परमिशन मतलब रूट लेवल पे जाके हमें डिलीट कर सकते हैं. So in that way we work. And front and rear you can see in circular queue it is pointing to the element which is having no nothing, means suppose आप -1 को कंसिडर कर सकते हो, like अगर कुछ भी नहीं है, queue is empty, then you can consider it. ओके But if you have an element, one element at least, front and rear will going to point to both. मतलब अगर आपका यहाँ पे एक एलिमेंट है, फ्रंट एंड रियर वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट भी होगा और फ्रंट के लिए वो एज अ पॉइंटर है, तो रिप्रेजेंट दैट अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इट विल इंक्रीमेंट बाय 1. So this is the internal step like how actually the queue are working. Processes are saved in this queue. मैं इसको सब प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा. लेट मी कवर सम इंटरनल कंसेप्ट. So जैसे कि priority queue में functions होते हैं, like you can see size, means it will going to return the number of processes or entries. Is empty function will going to check whether queue is empty, and you can just check it the key also based on that.
which is the smallest key present in the queue. Okay, and Okay. insertion, remove. So like the different operation we can do it. We can sort also the queue content. So with the help of collections and all, you can sort it. So these are the application actually कि कौन से applications है that I already told you कि means stack कहाँ यूज होता है कंपाइलर हमारा जो कंपाइलर एक और वेरी लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वी हैव इन इंजीनियरिंग कंपाइलर डिजाइन में हमारा कंपाइलर कैसे पार्सिंग करता है ना वो सब उसमें बताया गया है कंपाइलर डिजाइन में लाइक हाउ दिस सपोज ये एक टेक्स्ट है ठीक है तो कंपाइलर हाउ इट पार्स दिस ईच कैरेक्टर एंड दे मेक अ रिकॉर्ड ऑफ दैट दे मेक अ टेबल सो एक रेजिक्स पता है रेगुलर एक्सप्रेशन रेजिक्स रेजिक्स नहीं पता अच्छा लाइक ऑपरेटर कभी एसक्यूएल का लाइक ऑपरेटर में किया है एसक्यूएल डेटाबेस में वर्क किया है कभी नहीं अच्छा ठीक है जैसे अगर मुझे इसमें देखना है कि व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्टार्टिंग विद एस तो ऐसे मैं रेजेक्स यूज करता हूँ सपोज एसक्यूएल में मैं बता रहा हूँ सो व्हाट वी डू इट वी राइट लाइक दिस एक एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर होता है एंड वी राइट एस percentage like this means it will going to give me all the words that are starting with S. So it will give you stack, software, and stack, many more things it will give it to you. So ये क्या it kind of regex है मतलब यहाँ पे मुझे word find out करना है मैं regex का यूज करके तो normally regex में ऐसा भी होता है कि अगर आपको A to Z word find out करना है तो we write like this right हमें मतलब मैं regex बता दूंगा मतलब कंपाइलर सब्जेक्ट है जो कि each and every day how they parse your instruction how they convert it into the high level language means how they convert high level language to machine language and they understand the meaning because they check for the syntax so in order to check that they compile a work so there this stack are used to save the element जैसा कि वो एक stack create करते हैं and they save an element like this okay starting with s first will be stack will going to save then software then this stack so it will be going to be saved like this in the stack ये एक मेरा stack है suppose इसमें यहाँ पे ये stack सेव हो जाएगा next में ये software सेव हो जाएगा and it is not like कि मैंने यहाँ capital दिया है तो ये small को consider नहीं करेगा it will going to consider both so it will going to save it तो अभी वो stack के form में save हो जाती है then you compiler check okay जैसे मान लो कि मैंने जावा के प्रोग्राम में किया तो वो देखेगा पहले सेव करेगा ओके जावा लाइब्रेरी है ओके फाइन देन योर प्रोग्राम विल बी compatible to run okay okay if you have a main function then it will compatible to run so वो ऐसे सेव करते जाता है रिकर्शन में भी ऐसे ही होता है रिकर्शन का जो मैं स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखा था if it going too deep just let me know okay ओके अगर कहीं पे समझ नहीं आया so you can ask me if it is going too deep and so you can let me know. फैक्टोरियल टेबल का जो रिकर्शन होता है ना देखो इसमें ये बताया है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिकर्शन का कोड ये हम नॉर्मल रिकर्शन का कोड ऐसा होता है इफ यू रिमेम्बर इट यस ये दिस वन राइट सो हाउ इट कॉल्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्टैक हाँ you can see uh, yes so you first call is your fact into fact n minus 1 right so 4 into fact n minus 1 अभी ये क्या होगा fact 3 को हम लोग पॉप करेंगे और उसके बदले यहाँ पे प्लेस करेंगे 3 इंटू फैक्ट 2 मतलब ये फैक्ट 3 की वैल्यू हम यहाँ पे डालने के लिए हमें इसको वी नीड टू जस्ट कॉल दिस रिकर्शन हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कॉलिंग इट्स फंक्शन अगेन so 4 into fact 3 so 3 in fact into fact n minus 1 मतलब ये जो कंसेप्ट है इसका this one
this one. Okay, this is for fact n. Suppose अपने पास किया 4, so it will be 4 into factorial n minus 1 into n. तो यहाँ पे 3 okay into 4, ये 4 n की वैल्यू जो पास हुई वो 4 into fact 3. तो ये कैसे सॉल्व होता है मैं बताता हूँ. n into मैं फैक्ट ले रहा हूँ, you can take it as a factorial or whatever, n minus 1. okay, so जब ये stack में सेव होगा, so stack में suppose you pass the value 4 into fact n minus 1. This fact n minus 1 will be going to pop and insert by what it will going to replace by this n into n minus 1. So it will going to replace 3 into fact n minus 1. तो क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो गई थी, 3 हो गई थी, राइट. जब एक बार पॉप हुआ तो it will become 2. Are you getting? Yes. Okay. So now 4 into 3 into, sorry, I will pop this fact 2 again and it will give me So 2 2 into correct fact 1. fact 1. और यहाँ पे इसने कोई डिक्लेयर किया होगा, अगर if n is equal to 1 I will going to return 1. तो यहाँ पे देखो तो n n is greater than, yeah तो correct. n तो तो यहाँ 1 पे रिटर्न कर देगा, ये 1 रिटर्न कर देगा, करेक्ट. So 4 24 आ जाएगा. yeah 3 into 2 into 1, so it will give you 24. So to implement this we use stack, and इसका जो implementation है ये 4 into fact 3. fact 3 को फर्स्ट यहाँ पे पॉप करके वो इंसर्ट कर देगा 3 into fact 2, इसको 2 into fact 1 और fact 1 is equal to 1. अब ये fact 1 1 आया, यहाँ पे प्लेस करेगा, ठीक है. पहले ये सबको कॉल करते जाता है और बाद में वो वैल्यू को फाइंड आउट करते जाता है. तो यहाँ पे 4 into fact 3, 3 into fact 2, बट इंटरनली मैंने ऐसा बताया है, इट इज वर्किंग इन दिस वे because to explain you it has given in that way. Normally it will going to first insert all the value and then it will come in that direction. Fact 1 की value जो 1 है, it will going to place it here, it will going to place it here, it will going to place it here. In that way it will going to calculate the final value and it will going to pop it and show you. So like this stack works. Okay. This link I'm sharing with you, you can शेयर कहाँ पे करोगे? I'm sharing on the chat right now. मैं Trello पे एक बार I will going to upload all those resources with you on the Trello. Once your card will be, they will going to make your card for this course. I will upload it. Okay. Okay. So ये हो गया तुम्हारे stack का. Like now, if you want to see like how queue works for CPU scheduling, that also real time example I can show you. Queue work for just 1 minute. Let me rub this. Is there any queue? ये कुछ like this it works. Every boxes will have a process. It will going to remove once the task complete. So ये data को remove कर देगा, front को increment करके it will going to remove, and when the next process will come it will going to be replace it here by so ये because of that circular queue it will going to be added here somewhere here, or it will check where there is an empty space, it will going to add it there. Okay. queue के form में ये add हो जाता है. Now I'm just taking some good example here. वैसे तो हम लोग ये इस टाइप पे मैनेज करते हैं ये like this is called a Gantt chart. In this Gantt chart we make a record of that.
like how the process P3, P1, P2 it processes, how much, and this is your timestamp 02468, how much time it takes to execute. So normally in multitasking and multiprocessing operating system, they are not execute completely. They execute in a chunks. Like suppose this is a timestamp 2 is your module. मतलब हर एक size of that queue boxes of 2. तो P3 को पहले for 2 seconds it will go into 2 milliseconds it will going to execute that, then it will come to P1, then it will go into P2. So इसको round robin scheduling or primitive scheduling we say. Means we are not running the single process completely, we are context switching. Context switch एक term है. It means that you are continuously switching between the process in order to complete them. Okay. So like this we make a record. ये देखो ये best example है. देखो ये P1 process है, P2, P3, P4, and you have a burst time. मतलब you can just think like it's the time required to process P1. तो जैसे इसने हमने कैसे कल किया? किया था हाँ ये मल्टीटास्किंग में हाँ बता रहे थे. हम्म. So ये it's like a Gantt chart we created. बस वही बताना था. जैसे यहाँ पे P1 जो है 21 है, so it is taking 5. यहाँ पे ये 3 का हुआ, ये P3 6 है, so we have taken 5. तो उसने कंप्लीट हाँ तो उसने 5 लिए हाँ, तो लास्ट कॉमन में इसमें इसको था. 1. तो ये अभी जैसे P1 का 21 था, तो ये पहले सब एग्जीक्यूट होने के बाद में इसके 3 के एग्जीक्यूट किए हैं. तो ये इस टाइप के कुछ क्यूज के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं. ओके. ओके, लेट्स स्टार्ट. So this was the example, and this is a comparison. So in that comparison based, you can use both front is equal to -1 and rear equal to +1, and you can take a 0 also. And like a structure wise, both are data structure, their working strategies are different. Its stack is last in first out, but rear is FIFO, first in first out. So that's the reason that front white is pointing to the the first element, means not the last one. Rear is pointing to the last one, front is pointing to the first element. Okay, and in stack we have only one pointer, that is your top, but in queue we need 2 pointers. So these are some you have to take care. Rest are Okay. NQ, DQ, top -1, max, front and rear both are same. Queue having one variation, that is circular queue, priority queue, and double-ended queue. There is doubly-ended queue is also there. Doubly-ended queue in the sense that is I think in not in your syllabus, but let me show you. Doubly-ended means you can explore in both the तो directions. इसमें एक डाउट है, जैसे इसमें इन्होंने फ्रंट -1 लिया है तो सिनेरियो में रियर में कि -2 हो जाएगा. फ्रंट अगर -1 है, क्योंकि इसमें और लिखा ना, और फ्रंट इज इक्वल टू रियर yes, +1, तो रियर +1 तो मतलब कि वो 0. रियर तो -2 होना चाहिए. नहीं हाँ, यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू -1. ओके, नहीं, फ्रंट इक्वल टू -1. हाँ, तो एम्प्टी एलिमेंट है, एंड फ्रंट इक्वल टू रियर +1. फ्रंट अभी कोई है नहीं. इट इज एज्यूमिंग कि रियर भी अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे -1 ही है. अगर -1 + 1 करोगे तो 0 हो जाएगा. दैट इज मीन सेम फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज इक्वल टू यू आर पॉइंटिंग टू द 0 इफ यू डोंट हैव एनी एलिमेंट इन दैट. अगर तो ये इसको इसलिए इसने लिया रियर इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पे रियर मतलब यहाँ पे -1 ले रहे हैं. Okay. And doubly ended queue, let me show you. Just for your knowledge, I'm telling this. I think I haven't seen doubly ended in your syllabus, but pictorial way I can explain you so that you can have at least idea. ये होता है बेटर ये. हाँ,
ये मतलब यहाँ पे आप दोनों साइड से मैनेज कर सकते हो। मतलब यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इधर से भी इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल ऐसा है। मतलब इधर से भी आप डिलीट कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी इंसर्ट हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। मीन्स फ्रॉम बोथ साइड यू कैन। अर्लियर इन लीनियर में क्या कर रहे थे, वी आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, and in case of circular queue the flow will go back again and we are moving in this direction only, right? But in like a doubly ended queue, you can either move and delete from here also, and you can parallelly मतलब दोनों से delete कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे the front is managing in this direction and rear is managing in this direction. Are you getting what I'm saying? Yes. और ये so like this you can delete it. उसके और भी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर 1 है, राइट? इफ यू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, सो न्यू एलिमेंट जब हम इंसर्ट करेंगे, सो इट शुड बी हियर, राइट? रियर शुड पॉइंट टू हियर 30, राइट? बट हमने इंसर्ट यहाँ पे कर दिया है, सो नाउ रियर इज पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट फ्रॉम हियर और फ्रंट इज पॉइंटिंग टू दिस ऑल्सो। पहले फ्रंट 0 को पॉइंट कर रहा था, मैंने एलिमेंट इधर डाल दिया तो फ्रंट यहाँ से भी पॉइंट कर रहा है। बट डोंट गो इन दिस डीप, don't become confused for this one. As of now you don't focus on doubly ended queue, focus on only two, because they will going to ask you only two things, that is your uh, this one queue and normal queue and circular queue, priority queue also. Priority queue is same thing. Don't go for doubly ended queue because you will get confused, because as I can explain you, but while writing the code it will be very complex. Am I clear to Okay. you? Yes. Okay. And now the linked list, and as I said you, in the linked list also we are making a let me cover this linked list part, so tomorrow we can start together all these three programs, your queue, stack and linked list. Okay. और ये कोड देखे को Tomorrow we समझ have class at 8:30. yeah, I will try it. Yes, I will update you. Okay. Okay, because कल भी एक क्लास है मेरा, so I will update you. But इस कोड को देख के कुछ समझ में आ रहा है, मीन्स if I share with you, will you able to do it? मैं इसे समझाऊंगा इस कोड को, but I want you to just have a look on this, walk through this code Yes, once. I think I can do it. देखो ये ऑपरेशन से मेन के थ्रू हम मैं इसको कॉल कर रहा हूँ मैं। Hmm. ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको ऑपरेशन को कॉल करता है। So here in the linked list, as I said you, the node is divided into two parts. First is your data, then second is called next, or you can say address, which is going to point to the next element. And once you have a null here, it means that it will not go ahead. अब लिंक लिस्ट में भी सर्कुलर का कंसेप्ट होता है। ये वाला जो नोड है ना, वो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। मतलब सपोज इसका एड्रेस 0 है, तो ये जो है वो 0 को होल्ड करेगा ताकि ये फिर से इसको पॉइंट आउट करे। तो मतलब एलिमेंट इंसर्ट होते जाएंगे, जस्ट लाइक इट विल मूव लाइक अ ट्रेन। सपोज द एलिमेंट विल कीप ऑन इंसर्टिंग एंड रिमूविंग एंड देन अगेन कीप ऑन इंसर्टिंग रिमूविंग लाइक दैट। तो मतलब यहाँ पे सर्कुलर का कंसेप्ट क्या हुआ, इट इज यूजिंग द सेम स्पेस टू सेव द डेटा। तो अभी क्या होगा कि you are occupying this less space for similar data just by removing them. Okay. In linear क्या होता है कि as element are coming, you keep on adding the node and it will occupy the space. But here you are reusing the term. जो there are two concept like your system normally what we do, we use this disk banker and disk cleanup. I think I told you while जावा क्लास, माइट बी यू रिमेम्बर। डिस्क क्लीनअप होता है और एक होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये विंडो 8 और विंडो 7 में होता था। आई नीड टू चेक whether it is there or not. It might be there. In Windows 10.
Yeah, I'm just checking. Yeah, disk cleanup is there. You can see. Can you see my screen? Yes. So this disk cleanup, when you click on this disk cleanup, it will going to show you like what you can delete it, what are the things that you wanted to delete. So from this, you need to check box. You can check it, clean up system file, and you can delete it. So when you delete it, so it will make that space available, and you can reuse it. So ये जो disk cleanup और disk mentor है, they use internally they use this linked list to remove that. मतलब इनके जो how it works, वो क्या करते हैं, लिंक लिस्ट के फॉर्म में डेटा को सेव किया है स्टोरेज में, एंड दे आर कीप ऑन रिमूविंग. और ये जो लिंक लिस्ट है, दे आर लाइक ऑन द रैम मेमोरी. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि जो रैम में भी आपके जो डेटा होंगे, रैम में मतलब when you do this task manager also, in this task manager, this you can see like this is the memory they are occupying. When you select any one of those and you just do the end task, it means that you are removing from the same memory space. तो जैसे ही हम end task करते हैं, it removes those from that task from that memory जो हमारा RAM है. So in that way they can remove that space and make it available for the new one. So that's the reason circular queue was introduced, so that this after once your data is done, अभी जैसे मान लो अगर कि तुम्हारे पास 5 डेटा है, तो क्या करेगा ए बी सी डी, और ये अगर इसको कनेक्ट है, अब पांचवा डेटा आपको ऐड करना, यू विल सी दैट यू डोंट हैव एनी डेटा. तो अभी जैसे ही कोई एम्प्टी होता है, कोई भी ब्लॉक, कोई भी नोड, इमिडिएटली इट विल गोइंग टू असाइन टू दैट नोड. तो सपोज हो सकता है कि ए बी सी डी आया. अब अब जैसे ही आपने ए का काम हो चुका है, एक प्रोसेस का काम हो चुका है, तो यू विल रिमूव दैट. इट विल बी असाइन विथ ई, इट विल बी असाइन विथ एफ जी एच. फिर फ्लो इधर आएगा, ई का काम हो चुका है, रिमूव इट विद अदर एलिमेंट. एम आई क्लियर टू यू? Yes. व्हाट हैपन, इट्स लुकिंग कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं हो जाएगा शायद. अच्छा देखो उसमें क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है. सर्कुलर क्यू में क्या होता है, this in this node, if you have a null pointer, so it means what, that you don't have any node after this, so it will be like a linear linked list. But now we are using circular one. तो सर्कुलर में क्या होता है कि it will be going to hold the address of, suppose इसका एड्रेस सपोज 0, so it will going to hold the address 0. So now अभी आपके पास 4 डेटा है, कितना, a b c d. So now suppose नया डेटा आया e. अब आप कहाँ सेव करोगे, you have already filled data. The flow will go back and pointing to the first node, and it will do what, it will remove this data if it is not in use. अगर इसका काम हो गया, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है एंड वी डोंट वांट दिस, इट विल रिमूव एंड इट विल गोइंग टू रिप्लेस बिट बाय ई. अब नेक्स्ट डेटा जो आएगा एफ, वो कहाँ पे पॉइंट, एंड ये पॉइंटर आल्सो विल गोइंग टू कीप ऑन अपडेटिंग. नेक्स्ट डेटा विल कम, इट विल गोइंग टू सेव हियर एफ, यहाँ पे जी एच. immediately अब एच के बाद नया डेटा आता है, द पॉइंटर विल गो बैक अगेन एंड इट विल कीप ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यू. तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम मेमोरी को यू आर रीयूटिलाइजिंग इट बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट. सो तो हमको रीयूटिलाइजिंग, पुरानी मेमोरी चाहिए हो, जैसे ए चाहिए हो हमको डेटा ये, फिर वो देन अगेन ए विल कम. अगर ए को फिर से चाहिए, आगे वो ए फिर से आएगा. सो यू आर नॉट, नहीं, ये तो मेमोरी में स्टोर है ना, हमने मेमोरी इसमें से वो स्टोर्ड मेमोरी में से निकालना है, ये तो वो डिलीट हो जाएगा. हाँ वो तो स्टोर मेमोरी में जब भी अगर रीयूज करना है, so then, but how you will going to reuse, means even if you want to reuse, then normally जो link का size होता है ये बहुत ज़्यादा होता है कि that you can reuse it. But in case suppose ओके. if it is deleted, then the यस. new, you can just, it will re-come again and you can reuse that. ओके. But suppose the process that you want, अगर जैसे A है, मैंने पहले ही वो जो प्रोसेस वाला तुमको समझाया था, अगर ए कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता है तो ए विल ऑलवेज रिमेन इन द नोड, ए वोंट बी डिलीटेड. वी विल गोइंग टू डिलीट इट. मतलब अगर पॉइंटर इसको आता है, ए का भी कंप्लीशन नहीं हुआ है, सो विल गोइंग टू डिलीट द नेक्स्ट नोड, नॉट दिस वन. एंड दिस इज कंप्लीटली मैनेज बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. ओके, सो अगर ये
इसका मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, then we're going to see any other node which where we can backend the data, so we can delete that. Yes. So like that it works, the linked list. Okay. इसका मैं insertion deletion I will going to cover it tomorrow session, and I'm going to show all this code that we have seen. Means I'm going to show you Yes. queue, stack and linked list. और एक बार वो भी बात करना ट्रेलो को। और आपने वो मेरे स्लाइड्स आपने भेजी ही नहीं थी जीमेल पे। Okay, 1 minute.